And today we are studying of JavaScript syntax. Whoa, what is JavaScript syntax? In this, I'm gonna to fire on my VS Code, and here to fire my index.html. Here is a script, and everything now will be work in this script. Okay, let's go. And JavaScript syntax is the set of rules. यानी कि set of rule how JavaScript program are constructed. What mean constructed? It is a how constructed we will be. I think it is a constructed. It is a construct construction. Oh, you can judge on that. We will be copy this meaning and we will be gonna research it is a constructed and how to create a variable where and let you can create a variable using where and let and how to use variable use variable how to use and how to create we go to this I'm go to this and here we firstly link in my yes it is a linked and where is x where is a x let is a y and x it is a created a variable here is a I created a variable I created a variable and now go to the fourth line and here created variable and using variable how to use a variable and using variable here we will be use a variable how to use in variable if I say that x is equal to 5 and now it is x is equal to 5 and we say that y is equal to 4 and now it is a y is equal to 4 we go to log and log to x not x z and we say that z have if I say that let g is equal to x plus y it is another variable created here is the and using variable z x plus y z x plus y that and now we go to this here my console it is not working why that which problem because that we not connected to my script on with browser and we gonna do script right here script.src and say that script.js it is a talk each other and here to variable 9 it is z variable 9 what is the constructed here research that कंस्ट्रक्टेड इसे किसी वस्तु का निर्माण करना बनाना रचना करना पास्ट टेंस है टू बिल्डिंग और टू मेक समथिंग ओके वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट टू से मी चलो जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज क्या होती है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइन टू टाइप ऑफ वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होती है एक वेरिएबल वैल्यू होता है व्हाट इज अ फिक्स्ड वैल्यू कॉल्ड अ लिटरल इट इज अ कॉल्ड अ लिटरल and variable value are called variables and fixed values are called literal javascript literal है the two most important syntax rule for fixed rule values are number are written with or without decimal number are written with or without decimal string are text written with double और single quote ये तो होते हैं literal here is a number here is a literal it is called a literal and I say that it is a literal if I say that and it is hello it is a hello John we say that hello John we can it is the same because there is no difference at double quote and single quote it is all same as string are text
written with double or single quote. Okay. A JavaScript variable. JavaScript variable in programming language variable are used to store data values. We are using store data value. JavaScript use the keyword three keyword. In JavaScript variable have a three keyword where, let and cons to declare a variable. Equal sign is used to assign value to variable. जो equal sign है assign to a variable. जैसे here is a created a variable. I created here it is a x variable. Here I say that it is a x is equal to 6. X is equal to 6. It is a here I assign a value of x 6. And this example x defined as a variable, then x is assigned given the value, and given the value is a 6. JavaScript operator here. We have operator in JavaScript, arithmetic operator, which it is called arithmetic. It is a called plus, this minus, asterisk have a multiply, and it is the backslash called a divide to compute value. We gonna do, if I click that, it is a compute value, and we go to this here, you see that demo, and demo get element by I do then in HTML is the x, let x and let y g. Okay, you will be understand, I hopefully. If I say that it is a 5 plus 6 plus into 10, it is the inner HTML. We say that how it using I in the my browser. Firstly, we will create a two value. X, no, not created value. Document dot get element element by name, get element by id is equal to demo, and now that inner text, not inner text have the value of, it is automatically calculated all value here. If I say that if it is all value, not that it is only it, we are going to index HTML, and here to see that p have a demo, and now it is a text, it is a reference, and it is a 28. How it, and 4 multiply 5 equal to 4 multiply equal to 20, and 20 plus is 20 plus 8 is equal to 28 है ना. Yes, say that I am not right. Else here and here we got all that, and now go to this. JavaScript are assign operator. It is a called assign operator. Assign value to values. Assign values to variables. It is a created variable and assign values on the variable. And JavaScript expression. Here JavaScript expression. An expression is a combination of values, variable and operator. जो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होता है ना, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज. हियर इज अ वैल्यूज एंड वेरिएबल एंड ऑपरेटर विद कंप्यूट टू अ वैल्यू. द कंप्यूटेशन इज कॉल्ड एन इवोल्यूशन. Here is a for example 5 multiply 10 evaluated to 50. Okay, you will be understand. Expression can also contain a variable. Expression also contain a variable. If I say that it is multiply, and here it is say that we using z, it is also z is the number here, and contain a sign here. Expression can also contain variable values. Okay, the values can various type such as number and string, like that. For example, that John plus, here is some space, and Q is evaluated by Jodio, like that. Here if I say that we gonna to create it like that, and now is a John, it is a John v plus, and go say that it is space. Now we gonna do plus. John के बाद क्या था भैया, John इवो
John Doe. John Doe. It is a John Doe man. It is here created New Zealand. A JavaScript keyword. JavaScript keyword are used to define action to perform it. जो जावास्क्रिप्ट एक्शन होता है कि बताता है मतलब ये एक्शन हो गया यहाँ पर एक्शन इसका लेट कीवर्ड का एक्शन क्या है कि वेरिएबल को क्रिएट करना है इनने टू वेरिएबल को क्रिएट किया यहाँ पर एक्स को तू इतनी वैल्यू देगा और वाई को इतनी वैल्यू देगा द लेट कीवर्ड टेल द ब्राउजर टू क्रिएट अ वेरिएबल जो लेट कीवर्ड है ब्राउज़र को बताता है भाई साहब अपना वेरिएबल को क्रिएट कर दीजिए लेट और वेर भी ऐसे ही करता है आल्सो ब्राउज़र टू क्रिएट अ वेरिएबल अभी वेर भी ऐसे ही करता है इन दिस एग्जाम्पल यूज वेर और लेट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट यू विल लर्न मोर अबाउट वेर एंड लेट लर्न इन द ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट कमांड जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे किया जा सकता है जो नोट ऑल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड कोड आफ्टर डबल क्वोट इट इज अ सिंगल कमेंट इट इज अ बिटवीन इज अ ट्रीटेड एज अ कमेंट are ignored and will not be executed. If I say that here it is a we say that control and backslash it is a command. Here is a command. It is not appear in anything. It is not appear here. I will see that comment out. It is a comment out. I see that again. It is a something change here. I see that, and now we will be using double line command. If I say that in control A, shift alt A, it is a, it is a, it is a double line command. Select all tags you want to comment and then shift alt A. It is a command also. It is a also command. Here is not aware anything. We gonna to control G. It is a back to your our position. Our position just go to that JavaScript identify names. That is a identify name. How to identify are the JavaScript names. Identifier are used name variable are keyword and function. They rule legal name are the same in the most programming language. A JavaScript name must be beginning with क्या से स्टार्ट होगी ए लेटर से होगी ए टू जेड कहते भी स्टार्ट हो सकते हैं $8 इज ए साइन इससे भी साइन हो सकते हैं और ए एन अंडर स्कोर बस इनका यूज कर सकते हैं और बेफालतू और चीज़ का यूज नहीं कर सकते ना ही हम डिजिट का यूज कर सकते हैं इफ आई से दैट इट इज ए जी एंड से दैट हियर इज ए टू आई से दैट टू एंड नाउ एनीथिंग हियर नॉट ए वैल्यू it is an uncode error syntax invalid unexpected token add this because it have error don't start number we don't not start number at digit number maybe later digit underscore or sign subsequent character तो हो सकते हैं subsequent what is say that I don't know if I say that it is a underscore चाहे भी असाइनेबल नहीं है और जाते हैं अंडरस्कोर रेफरेंस जेड नोट ऐड अच्छा इसने इसको जॉन जी अच्छा देखते हैं यहाँ पर फिर नंबर से भी होना चाहिए नंबर से भी होना चाहिए 2G 8G क्या 8G से भी नहीं होगा अनकोडेड अनइनवैलिड हियर अंडरस्कोर का यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ किया जा सकता है नंबर का नहीं शुरुआत में सब्सिक्वेंट होता है बाद का या बाद में होने आने वाले प्रवृत्ति उत्तरवर्ती कमिंग आफ्टर और लेटर कमिंग और आफ्टर बाद में तो आ सकते हैं पर शुरुआत में नहीं नंबर आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द नेम द जावास्क्रिप्ट कैन इजली it distinguishes identity feature from number. JavaScript is a case sensitive.
और केस सेंसिटिव है तो यही ऑल जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव द वेरिएबल लास्ट नेम और लास्ट नेम आर टू डिफरेंट वेरिएबल इट इज़ अ टू डिफरेंट वेरिएबल JavaScript are not interrupt let or let as a keyword let ये दोनों इंटरप्ट नहीं करेंगे JavaScript and case because that if I say that let you say that let it is a given me error it is a given me error here you see find that it is a error as it let is a disallowed as a lexically bound name है if I say that let it is say that क्या let को यूज किया जा सकता है ब्रो जितना मेरे को क्या इसको तो यूज किया जा सकता है हाँ इसको तो यूज किया जा सकता है here you will be see that anything change here you see that change and now go to G because that it is a confusing me variable it is JavaScript and camel case horizontally programming have two different way of JavaScript joining multiply but into one variable name hyphens it is a hyphen name smarter it is a hyphens are not allowed in JavaScript these are reserved for subtraction हाइपन को नहीं यूज कर सकते जैसे कि हम बोलते हैं जो है हमारा इसको बोलते हैं फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम हाइपन नॉट अलाउड हाइपन नॉट अलाउड वो पहले ही बोल रहा है और लास्ट नेम इसलिए हम कैमल केस का यूज़ करते हैं फर्स्ट नेम that it is a last name it is a not allowed for my browser show me error uncoded syntax invalid left hand side is assigned because that we are using camel case here is it is called camel case first name it is a called camel case not what do you want to see me और इसको बोलते हैं camel case अब it is are allowed here they underscore यू कैन यूज अंडरस्कोर हाइपन को नहीं यूज कर सकते अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं मास्टर कार्ड अपर केस कैमल केस इस तरह यूज कर सकते हैं लोअर कैमल केस अपर केस पास्कल बोलते हैं इसको लोअर कैमल केस बोलते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग टेंड टू यूज कैमल केस दैट स्टार्ट विद लोअर केस लेटर स्टार्ट इस तरह यूज होती है जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट is a Unicode character set. Unicode cover almost all the character punctuation or symbol in the word for closure loop. Please study completely reference here. See that what is a Unicode. What is the correct syntax for assigning value to variable? तो असाइनिंग वैल्यू तो करेक्ट यही है। अब एक्सरसाइज की बारी आती है और एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। यह हमारा क्वेश्चन आंसर सही था। विच वन इज़ नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम? इट इज़ लीगल विच इट इज़ अ लीगल इट इज़ आल्सो इट इज़ अ लीगल इट इज़ अ लीगल इट इज़ अ लीगल इट इज़ नॉट लीगल इट इज़ नॉट लीगल माइनस साइन नॉट अलाउड JavaScript variable name are case sensitive. Name is the name as a name is a false because that it is a camel case. I completed my exercise. Thank you for watching all friends.